Hello students, good morning. Welcome to your English class. We are learning pronouns. Till now we have learned various types of pronouns. So today we shall learn one more type of pronoun which is called emphatic pronoun. Okay? To understand it well, let's discuss the name of the pronoun first. Emphatic. The word emphatic has been made with the word emphasis. What is the meaning of emphasis? Emphasis means special importance, value or prominence given to something, which means किसी किसी चीज़ पर दबाव देना या स्ट्रेस देकर उसके बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में बताना. Okay? So we can get the idea that the pronouns which are used to convey emphasis are called emphatic pronouns. Okay? Let's have the definition now. When reflexive pronouns are used to emphasize the noun, they are called emphatic pronouns. So remember that when reflexive pronouns, what are reflexive pronouns? As like myself, yourselves, themselves, ourselves, these are called reflexive pronouns. Correct? Yesterday we studied about that. So when reflexive pronouns are used to emphasize the noun, they are called emphatic pronouns. जब reflexive pronouns का use किसी भी noun को या subject को emphasis करने के लिए, उसकी value के बारे में बताने के लिए या उस पर stress करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे pronouns को emphatic pronoun कहते हैं. Why? Because it is giving the emphasis, it is giving the stress on the subject, on the noun. Okay? For example, she herself informed me. They themselves saw it. Now these are the examples as like herself, themselves, both are here emphatic pronouns. Now don't get confused because herself, themselves, yourself, these all are reflexive pronouns. Yesterday you studied that. But try to understand the difference between these two and the relation as well. Let's read further and try to understand that. Relation between reflexive and emphatic pronouns. As like, reflexive pronouns show that the action of the subject reflects upon the doer. Okay? Reflexive pronouns वो होते हैं, वो शो करते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो उस सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है. It comes back, the action comes back to the doer. Okay, but however, an emphatic pronoun simply emphasizes the action of the subject. लेकिन emphatic pronoun बहुत सिंपल है. ये सिंपली क्या करता है? एक्शन, जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर स्ट्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी कट हर सेल्फ. हेयर हर सेल्फ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एज शी कट हर सेल्फ, उसने काट लिया खुद को. हर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंस द सब्जेक्ट, द गर्ल्स एक्शन कटिंग, refers back to the doer, the girl. Okay? Now let's take another example. She herself cut the cake. Now here herself is used as emphatic pronoun. How? Let's get the meaning first. She herself cut the cake. उसने खुद केक काटा. Herself is an emphatic pronoun because it is emphasizing the subject. Now the stress is here on the noun subject she. किसने केक काटा? उसने. She herself. उसने खुद केक काटा. Okay? Now this is the main difference between emphatic and reflexive pronouns. When reflexive pronouns is used as giving the emphasis on the subject or noun is called an emphatic pronoun. Okay? इसके यूसेज से आपको पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या emphatic. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, I locked the door. I locked the door. मैंने दरवाज़ा खुद बंद किया. जब मैं हिंदी में बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैंने दरवाज़ा खुद बंद किया. And then when I say I myself locked the door, मैंने खुद ही दरवाज़ा बंद किया. Are you getting what I'm trying to say? Trying to say there is a difference. When I say I lock the door myself, यहाँ पे myself word
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के ऊपर एम्फेसिस नहीं कर रहा है, बल्कि इसका एक्शन पलट कर दोबारा ही डूअर पर आ गया। ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस में व्हेन आई से आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद ही दरवाज़ा बंद किया है, इसका मीनिंग माई सेल्फ यहाँ पे यूज़ क्या हुआ, कैसे हुआ है, एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है नाउन पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट इज़ हेयर आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही दरवाज़ा बंद किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नाउन पर एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, so I hope you have understood that what is reflexive pronoun and what is called an emphatic pronoun. Okay, now all the words as like myself, themself, itself, herself, yourself, these all are reflexive pronoun when it is used as the action of the subject reflects and turns back on the subject itself, and when these reflexive pronouns used to emphasize the noun or subject, it is called emphatic pronouns. Okay, तो आपको you have to be very careful and you have to recognize through the sentences, through the usage of these words as like myself, herself, itself, that how it has been used, in what way, in what manner. If it is given an emphasis on the subject, on the noun, then it is called emphatic pronoun, and when it is showing the action of the subject reflects or turns back on the subject, then it is called reflexive pronoun. Okay, so बहुत ही सिंपली आपको ये चीज़ लर्न करना है। पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जो सेल्फ या सेल्फ्स पे एंड होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड व्हेन दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, और जब माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ का यूज़ नाउन को एम्फेसिस करने के लिए, उसकी तरफ स्ट्रेस करने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। Okay, so I hope you have understood it well now. So try to make more and more sentences using both the reflexive pronoun and emphatic pronouns. Okay, so that you can get the clarity in the concept of reflexive and emphatic pronouns. Okay, I'll see you in next class. Thank you.